अथ श्रीदुर्गा सप्तशती त्रयोदशोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्। विद्या तथैव क्रियते भगवत विष्णुमायया। तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः। मोहयन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे। तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्। आराधिता सेवनृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरतः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं। निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च। जगाम सदयस्तपसेस च वैश्यो महामुने। सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपूलिन संस्थितः। स च वैश्यस्य तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन्। तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महिमयीम्। अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणे। निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो। ददतुस्तो बलिं चैव निजगात्राश्रगुक्षितम्। एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः। परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन। मतस्तत् प्राप्यतं सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो विव्रेन्द्रपो राज्यं विभ्रंस्यन्यजन्मनि। अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यस्य ततो ज्ञानं विव्रे निर्विण्णमानसः। ममेत्यहमिति प्राज्ञ सङ्गविच्युतिकारकम्। देव्युवाच स्वल्पेरहोभिर्नृपते स्वयं राज्यं प्राप्स्यते भवान्। हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति। मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवादविवस्वतः। सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्यस्त्वया यश्च वरोऽस्मतोऽपि वाञ्छितः। तं प्रयच्छामि संसिद्ध्ये तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं। बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्तया ताभ्यां भीष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः। सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः। सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरतवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः।